हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम जो ऑप्शनल अच्छी पेपर 2 रो बीडी ओडिशा बीडी एससीआरटी बीडी रो जो सरकारी बीडी गुड़ाक एडमिशन हेबो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स गुड़ाक जो एडमिशन हेबो तार जो एंट्रांस टेस्ट पाई हिस्ट्री विषय आम पढ़ा। एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। So as you know that, let's have a recapitulate of the previous activities, how these activities or these events leads to the establishments of British Empire in India. As you know that the Mughal Empire was established in 1526 when there was a Panipat war between Babur and Ibrahim Lodi, and and the British Empire was established soon after the Panipat war. But the empire was declined after the death of Aurangzeb in the year 1707, and officially, and you know that officially it was abolished after 1858, very close to the Sepoy Mutiny in 1857 and 58. So the Mughal Empire, which is established in 1526, is declined by 1707 and officially by 1858. Because the reason being is that the successor of the Aurangzeb, they have less focused on the administrative issues rather than they have focused on the internal conflict among them. As a result of which, the Marathas people are also engaged more and more in bandits and plunder. That means they are more focusing on choro, dokat, semane more engaged Maratha mane, and they have a very less focus on administration. जो शासन व्यवस्था जो इम्प्रूवमेंट आनिबा कथा सेटा से माने न आनिकी मराठा माने से माने दे हैव मोर फोकस ऑन बैंडिट एंड द प्लंडर। जो मराठा एवं मुगल मानकर जो साम्राज्यर धीरे धीरे जोटा लेस फोकस रहिला एडमिनिस्ट्रेशन उपरे, तार जो भारतर जो एकता थिला जहाँ फल मराठा हो, राजपूत माने होंतु, सिख होंतु, गुजराती होंतु कि बेंगली माने होंतु, एंड अदर रीजनल ग्रुप्स आर जो गुड़ाक थिला इन स्मॉल पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर एंड अगेंस्ट द मुगल एंड सॉ दैट द एंटायर administration process was broken down. As a result of which the outsider they have it has created a scope for the outsider to invade India. तो यही जो आमर जो लोकल रीजनल ग्रुप गुड़ाक थे निज निज भितर कलह लगिकी एवं मुगल जेहेतु मुगल साम्राज्यर पतन घटी तापर आउटसाइडर मानक जमती है डच है आम जदि देखा डच हो कि पर्तुगीज हूँ कि इंग्लीश हूँ कि फ्रेंच हूँ से गोटे प्लेस मिलला देयर इज ए स्कोप फॉर आउटसाइडर्स टू इनक्रीज देयर इन्फ्लुएंस इन इंडिया। जहाँफल जो ब्रॉडली आम जो देखा मुगल साम्राज्यर पतन मराठा मानकर मोर फोकस ऑन द एंटी सोशल एक्टिविटीज और इंटरनल कन्फ्लिक्ट रीजनल इंटरनल कन्फ्लिक्ट पाई आउटसाइडर इट्स क्रिएटेड ए scope for the outsider to enter into India and influence the Indian systems during 16th and 17th centuries. Subsequently, आम जो Portuguese विषय देखा, the Portuguese dominated Western trade. Western trade during that times during 16th and 17th Portuguese मानकर गोटे मेजर रोल थिला इन वेस्टर्न ट्रेड। आम जानी जितकी भी भारत को जो माने आउटसाइडर आसी पर्टिकुलरली दे हैव मोर फोकस ऑन द ट्रेड एस्पेक्ट्स। धीरे धीरे तंकर जो उद्देश्य थिला लक्ष्य थिला ताकू परिवर्तन होइछि, बट इनिशियली पर्तुगीज जेते बेले माने आसिले व्हेन द वास्को दा गामा रीच द कालीकट इन 1498 सोल पर्पज वाज टू हैव ए ट्रेड इन इंडिया, बट तंकर जो थिला मोस्टली but in India they compete with Indian and Arab traders. जेते बेले पर्तुगीज माने आसिले when they have entered into the India, the major competitor of Portuguese are Indians and then Arabian people. And after the end of the 16th centuries, after the 16th centuries, Dutch and the English merchandise are also major competitor of the Portuguese people. तो धीरे पर्तुगीज मानकर भारत को आसवा परे मुख्यतः भारतीय एवं अरब मानकर सहित मुख्य कंपिटिटर थिले
कोडी बिजनेस ट्रेड एंड बिजनेस रे बट सब्सिक्वेंटली बट द लेट 16th centuries इट हैज चेंज जो द पर्तुगीज मानकर मुख्य जो कंपिटिटर रहिले डच एंड द इंग्लिश पीपल सो आउटसाइडर जो माने रहिले particularly the Portuguese, Dutch, English and the French तांको भितरे there was a conflict for the trade advancement or for the trade competitive trade policies तांको भितरे जो ए जो निज भितरे जो कलह सृष्टि हैला particularly in the sea route कोथि उपरे particularly in the sea route because as you know that most of the outsider they came through the sea route जो सागरीय जलभाग से भारत को प्रवेश करथिले तो तांकर मोस्टली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थिला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो पर्तुगीज मानकर थिला तांकर कमर्शियल और ट्रेड रिलेटेड तांकर मुख्य उद्देश्य थिला जदिवा सेमानकर आउ गोटे मुख्य एस्पेक्ट थिला इंटरेस्ट थिला जे केमिति दे विल कन्वर्ट द इंडियन पीपल इनटू कैथोलिज्म क्रिश्चियन बा कैथोलिज्म धर्म को प्रचार एंड प्रसार करबा तांकर गोटे मुख्य उद्देश्य थिला सो सब्सिक्वेंटली व्हेन दे हैव एंटर्ड टू इंडिया एंड दे हैव एस्टाब्लिशमेंट इन इंडिया जिते बेले धीरे धीरे तांकर आधिपत्य विस्तार करबा सब्सिक्वेंटली लार्ज पार्ट ऑफ द कोस्ट आम कहूँ लार्ज पार्ट ऑफ योर लो कोस्ट एरिया दैट मीन्स द शिलोंग और श्रीलंका एरिया वी कैन से दैट द शिलोंग इज द श्रीलंका नाउ इज प्रेजेंटली नोन एज द श्रीलंका तो धीरे धीरे पर्तुगीज माने लो कोस्ट लाइन एरिया को से माने तार प्रादुर्भाव और तांकर विस्तार करने को तांकर बिजनेस एंड वाणिज्यर तार प्रभाव को विस्तार करने को लगे सो सब्सिक्वेंटली डच इज ऑल्सो डच माने जिते बेले हमको डच माने जिते इंडिया को इन्वेटेड कले इन ड्यूरिंग 1640 एंड अबाउट 1658 आम जो देखा 1640 और 1658 भितरे पर्टिकुलारली डच वन्स डच आसिला परे से माने फास्ट कौन कले पर्तुगीज थे मुख्य कंपिटिटर तो से माने कौन कले डच माने जिते आसिले पर्तुगीज मानू फास्ट से माने बिजनेस रू बाहर करने को चाहिए एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच कौन है धीरे धीरे जिते बेले पर्तुगीज मान साइड हो गले तो डच दे हैव एंटर इनटू आमर जो बिजनेस प्रोसेस थिला पर्टिकुलरली शिलोंग लो कोस्ट एरिया एंड इंडिया रे पर्तुगीज माने आसिला परे सॉरी डच माने आसिला परे पर्तुगीज मानक पई मुख्य समस्या देखा जाइतिला जा फल कौन है इनक्लूडिंग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द ट्रेड बिजनेस को से माने मोस्टली आम देखा ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट जोटा है पर्टिकुलरली अरब महासागर एवं आम जो देखा बंगोप सागर उपरे अरब सागर और बंगोप सागर उपरे तार दीटा मुख्य कोस्टल बेल्ट रे और कोस्टल लाइन रे तांकर मुख्य थिला बिजनेस एवं ट्रेड एस्टाब्लिशमेंट पेंठस्थली तो लाइक पर्तुगीज मानकर भलिया डच माने कौन कले सिंहलीज और द श्रीलंकन पीपल सहित दे हैव इंटरमेरिड और तांकर गोटे संपर्क स्थापन कले एंड ए संपर्क को कौन करागला आम बर्गर बोलिके आम ताकू कहूँ से संपर्क को धीरे धीरे ये जो डच संप्रदाय एंट्री कले पर्तुगीज मानकर बिजनेसमैन मानकर धीरे धीरे आधिपत्य विस्तार पतन घटवा लगिला तो डच कंट्रोल द ट्रेड ऑफ शिलोंग पर्तुगीज मान बाहर करदेला परे धीरे धीरे तांकर आधिपत्यर विस्तार को पतन कला परे डच पीपल ट्राई टू कंट्रोल द ट्रेड ऑफ द शिलोंग फ्रॉम देयर सेवरल कोस्टल बेसेस जो कोस्टल बेसेस थिला फ्रॉम दोज कोस्टल बेसेस दे ट्राई टू कंट्रोल द बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द पर्तुगीज एंड दिस कंटिन्यू अप टू 1795 सेटा is continue up to 1795 when British took over that island तो जिते बेले कौन है अंटिल नेपोलियन वार है पर ब्रिटिश जिते बेले एंट्री कले बा 1795 से पर्यंत डच मानकर गोटे मुख्य आधिपत्य रही है इंडिया पर सो ऑलमोस्ट इन फ्रॉम द 1614 to 1795 डच हैड प्रेमिनेंट रोल इन ट्रेड एंड कमर्स एंड बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ इन इंडिया तांकर जो मुख्य आधिपत्य थिला ट्रेड एंड कमर्स रे डच माने 1640 रु नेकी 1795 पर्यंत तांकर आधिपत्य विस्तार करथिले सब्सिक्वेंटली इंग्लिश कथा इंग्लिश माने जेतेबेला इंग्रेज माने जेतेबेले आसिले तो आमे देखिबा द इंग्लिश लाइक द यूरोपियन ट्रेडर्स नेशंस लर्न अबाउट द बिगिनिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉर्दर्न पैसेज टू इंडिया बाय सी अराउंड द रशिया एंड साइबेरिया इन 1518 तो आम देखीचे इंग्लैंड इंग्लिश पीपल माने भी
मोस्टली से सी रूट्रे नॉर्थन पैसेज थ्रू नॉर्थन जो पार्ट थ्रू दे हैव एंटर थ्रू द सूरत गुजरात एरिया में जो कहूँ सूरत एरिया थ्रू दे हैव एंटर इनटू इंडिया पर्टिकुलरली आफ्टर रशिया एंड साइबेरिया से रास्ता देकी से एंट्री करते इंडिया रे एंड इन 1583 राफेल फीट आम जानी राफेल फीट वन ऑफ द इंग्लिश मर्चेंडाइज जो इंग्लिश बिजनेसमैन जड़े थे बणिक जड़े थे ना हूँ राफेल फिट कौन है जिते बले पर्तुगीज मान अंडर रे थिला इंडिया माने ट्रेड एंटर कमर्स एंड द ट्रेड एंड बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट इंडिया रो पर्तुगीज मान अधीन रे थिला तो दे हैव सील द एंटायर कोस्टल एरिया तो कोस्टल बेल्ट को और टोटल कोस्ट जो बंगोपसागर थिला और जो अरब सागर थिला बोथ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल दिस एरिया वर सील बाय द पर्तुगीज जाफल कौन हम दे हैव ए कंट्रोल ओवर द बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट एंड एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच देयर आर वेरी लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर व्हेन द पर्तुगीज डोमिनेटेड द बिजनेस पॉलिसी और बिजनेस एस्पेक्ट इन इंडिया तो यही जो राफेल फिट थे कौन है समहाउ और समवेयर दे हैव ब्रेक दो सील जो एरियाटा से सील करते इंग्रेज माने ताकू से ब्रेक डाउन करके दे हैव एंटर इनटू इंडिया ये जो ब्लैक हेड जो अच्छी इट इज ए प्रोहिबिटेड एरिया व्हिच आर सील बाय सम सेफ एंड सिक्योरिटी मेजर्स थ्रू ताकू जो प्रोटेक्टेड करा हितला ताकू राफेल फिट ताकू भांगी की और ताकू जे कौन से प्रकार ताकू इंडिया को एंट्री कले वंस द राफेल फिट एंटर इनटू इंडिया से जिते व्हेन हैज विजिटेड द कैपिटल ऑफ अकबर द आगरा वाज द कैपिटल ऑफ आगरा अकबर एंड द फतेहपुर सिकरी एंड सब्सिक्वेंटली इज विजिटेड द गोवा तो जिते बेले राफेल फिट आसिले इंडिया को एंटर कले से जो विजिट कले अकबर दरबार फतेहपुर सिकरी एंड गोवा एंड रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1900 इन 1591 तो आई से जो फ्रॉम दिस 7 years रहिले फ्रॉम 1583 टू 1591 ही वाज इम्प्रेस विथ द वेल्थ ऑफ इंडिया भारतर जो तार डेवलपमेंट जो थिला जो धन संपत्तिर जो प्राचुर्य थिला ताकू देखिकी राफेल फिट ही वाज टोटली एस्टोनिश एंड टोटली सरप्राइज द हाउ रिच दिस कंट्री वाज से बहुत से राफेल फिटा बहुत मुग्ध होते भारत धन संपत्ति को आखि रखी जिते से 1991 को इंग्लैंड को रिटर्न कले एंड दैट वाज द वन ऑफ द मेजर रीजन्स दैट व्हाई दे हैव द इंग्लिश पीपल दे हैव प्लान टू एंटर इनटू इंडिया सेटा थिला गोटे मुख्य जोपाई कि भारत को इंग्रेज माने एंट्री करिवार तार गोटे मुख्य उद्देश्य थिला तो इन द बिगिनिंग कौन है स्टार्टिंग्स रु जिते बेले है द कोर पर्पज एम ऑफ द इंग्लिश पीपल इंग्रेज मानकर मुख्य लक्ष्य थिला साउथ ईस्ट एशिया रे से माने तांकर कौन ट्रेड एंड स्पाइस ट्रेड पर्टिकुलरली मसला व्यवसाय पर मोर फोकस करते साउथ ईस्ट टॉकिंग अबाउट इंडोनेशिया हो सिंगापुर हो से एरिया गुड़ाक आमर कौन थिला मोस्टली दे हैव मोर फोकस ऑन द साउथ ईस्ट एशिया रे से मोर फोकस करते एंड वेन टू इंडिया एंड रीच द सूरत आम आगुरी भी लास्ट स्लाइड डिस्कसन करते दे हैव एंटर टू इंडिया थ्रू द वेस्ट पैसेज जो मार्ग थिला वेस्टर्न मार्ग जो थिला आमर जो पश्चिमांचल अंचल से भारत को एंटर करते एंड दे एंटर इनटू सूरत गुजरात इन 1608 1608 मसीह दे हैव एंटर इनटू इंडिया एंड से टाइम रे कौन थिला व्हेन इट्स क्लोज टू डिक्लाइन ऑफ द मुगल पीरियड Mughal people. So during 1573 the king of the Mughal empire was Jahangir. से टाइम रे during 1573 रे जहांगीर थिले मुगल एम्पायर एंड वन कैप्टन ऑफ दिस वाणिज्य ग्रुप और वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्चेंडाइज ग्रुप विलियम हॉकिंस द कैप्टन ऑफ द टोटल ट्रेड ग्रुप ऑफ इंग्लैंड दे हैव अप्रोचेस द जहांगीर फॉर ए ट्रेड ट्रेटी इन इंडिया से जहांगीर को रिक्वेस्ट करते भारत सहित गोटे वाणिज्य संपर्क एस्टाब्लिश करने किए करते विलियम हॉकिंस गिव ए प्रपोजल्स टू द जहांगीर फॉर ए बिजनेस ट्रीटी विथ इंग्लिश पीपल एंड इट वाज ड्यूरिंग 1517
So when they have entered, the English people entered into India, it was in 1608, and they made a proposal with the Mughal Emperor Jahangir during 1573. That needs to be noted. So the William Hawkins जो ଥିଲେ on behalf of King James I, कार on behalf रे आस्थिले during the time of Jahangir, the King James I or King James I was the empire in England. England ର ରାଜା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ King James. He made William Hawkins on behalf of King James made Jahangir, and they have requested for a trade treaty in India. So in 1616, King James sent Sir Thomas Shrew, who finally got permission from the Jahangir for a East India Company to build a factory in Surat. And finally in 1616, King James କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ଭେଜିଲେ, ମାନେ ପଠେଇଲେ, that is Sir Thomas Shrew. ସେ କ'ଣ, he got permission from the Jahangir to establish East India Company in India and a factory in Surat. So officially you can say that in 1616 East India Company started working in India. 1616 ରୁ ସାର୍ ଥୋମାସ୍ ରୋଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମକ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ in Surat. The journey start from East India Company. The journey was started from the Surat. Surat to ही East India Company ର journey ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା. So from the Surat, English ship completed eliminated the Portuguese. ଯେତେବେଳେ when they have established a business house or company in the Surat, they have completely eliminated the influence of Portuguese. Portuguese ମାନଙ୍କର power in the sea level ରେ they have completely eliminated, and English merchandise becomes the principal traders of the port. ସେଇ जो ବନ୍ଦରରେ western port ରେ completely English people ମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଲା. When they got the permission from the Jahangir, they completely eliminated the influence of the Portuguese. Portuguese ମାନଙ୍କର ତାର influence को completely से eliminate करले. So become the principal. And in 1639, they negotiated with the small local rulers to buy land near the village of Mandaraj. Say time when they have entered into Surat or they have establishment in the Surat, 1639 ରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, local traders ମାନଙ୍କୁ, local ruler ମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ ରିଜନାଲ ରୁରାଲ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରାଜା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନିୟର ବାଇ ଭିଲେଜ ମନ୍ଦରାଜରେ ସେ କିଛି ଜମି ପରଚେଜ କଲେ. and around small lagoons at the mouth of Combe riverର ମୁଖ୍ୟ ତାର ମୁହାଣରେ ସେମାନେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ସ୍ମଲ୍ ଲାଗୁନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପରଚେଜ କଲେ. ଲେଟର ଅନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ମନ୍ଦରାଜ ବିକମ୍ ଦ ମାଡ୍ରାସ. ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦରାଜ ଭିଲେଜ ତାକୁ ମାଡ୍ରାସ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା. where this Fort St. George names England patron saint. Fort St. George ନାମରେ ଏଟାକୁ ମାଡ୍ରାସ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ପେଟ୍ରୋନେଜ ସେଣ୍ଟ, ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପେଟ୍ରୋନେଜ ସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ଭାବରେ ମାଡ୍ରାସ, ତାଙ୍କର ନାମଟା ବିକମ୍ ଦ ମାଡ୍ରାସ ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜଙ୍କ ନାମରେ ମାଡ୍ରାସଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା. So in 1690 they made a settlement there where they thought their ships could be protected or rescued from if they needed, where they were more on fingers in the Indian authority. In 1690 ରେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଶିପ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡର ମାନଙ୍କ, ଅଦର ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଥିଲେ, ଡଚ୍ ଥିଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯେଉଁ ପିପୁଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ to protect their business establishment and shipଟା particularly ଜାହାଜକୁ protect କରିବା ପାଇଁ they made a various agreement with the settlement with the
इंडियन अथॉरिटी जो मैंने थे सहित दे हैव स्टार्टेड discussing with the Indian authority. Later on कौन है they were permitted to build a fort and new settlement was called Fort Williams. तो से जो बंदर कथा कहूँ कि फोर्ट कथा शिप कथा कहूँ जहाज को प्रोटेक्ट करने से माने गोटे लोकल ट्रेडर्स मान सहित से लोकल एरिया सहित रूरल इंडियन अथॉरिटी मान सहित डिस्कशंस कलापर फाइनाली दे गेट द परमिशंस टू गोटे फोर्ट बा बंदर गोटे करने दुर्ग गोटे करने दुर्ग गोटे करने फोर्ट विलियम जोटा कहूँ आम पॉपुलर फोर्ट विलियम वर एस्टाब्लिश ड्यूरिंग 1688. तो कार ना आगला फोर्ट विलियम्स बिकम द नेम विथ द आफ्टर विलियम थर्ड जो राजा थे नाम हिसाब से विलियम फोर्टा कले एंड इट वाज ड्यूरिंग द ग्लोरियस रिवोल्यूशन इन 1688 इन इंग्लैंड. ग्लोरियस रिवोल्यूशंस जो आमर आम जाचे ग्लोरियस रिवोल्यूशंस इन इंग्लैंड इन 1688. तो जाफल कौन है से माने फोर्ट विलियम्सटा एस्टाब्लीश कले कौ जगह इन कैलकाटा. इट्स वाज बिकम इंस्टीट्यूट ऑफ कैलकाटा. कैलकाटा ना केमती आसिला इज प्रोबाबली केम इन द नेम नियर बाय द साइन ऑफ द गॉडेस काली. कालींकर ना हिसाब से कालिकट घाट काली घाट हिसाब से माँ कालींकर नाम हिसाब से इट वाज नेम एज कालिकट एंड लेटर ऑन इट वाज एडजॉइनिंग विलेज ऑफ कालिकटा. सो द फोर्ट विलियम्स एस्टाब्लीश कले कैलकाटा शहर कलिकता शहर जोटा आम कहूँ. सो कौन है सो इन 1661 Bombay was ceded to the English crown by Portuguese as a part of marriage contract. तो आम जान फास्ट दे हैव इन्वेडेड द सूरत को से कब्जा कले देन दे हैव कनेक्टेड टू माड्रास देन लेटर ऑन टू द कैलकाटा. in 1661 कौन है देयर वाज ए मैरिज रिलेशनशिप बिटवीन Portugal people and English people in 1661. तो पर्तुगाल और इंग्लिश मानकर जो मैरिज प्रपोजल गोटे संबंधर जो किंग थे से टाइम रे चार्ल्स टू वाज द प्रिंसेस और द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड द पर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रेंजा. सो ये जो आमर प्रिंसेस थे कैथरीन ब्रेगेंजा और चार्ल्स टूंकर जो गोटे मैरिज संपर्क गढ़ी उठा जहाँफल कि दे गॉड द पर्तुगीज आगर बॉम्बेटा पर्तुगाल मानकर अंडर होता. तो इन 1661 द पर्तुगाल पीपल हैव गिवेन एज ए गिफ्ट बॉम्बे को गोटे गिफ्ट आकार रे क्या दिगला चार्ल्स टू को दिगला जहाँफल बॉम्बे का अंडर रहा इंग्लिश पीपल मानकर अंडर रहा. दस आफ्टर द सूरत Madras and Calcutta the East India Company moved its Western India headquarter to Mumbai in 1687. तो से कौन है अर्लियर दे हैड द मेजर बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी जोटा मेजर थिला हेडक्वार्टर थिला सूरत. सो आफ्टर सूरत एंड Madras and Calcutta English people they have moved their East India Company's headquarter to Mumbai in 1687. कौन कले बिकॉज द बॉम्बे वाज वन ऑफ द कोस्टल बिजनेस हब इन इंडिया. आम जाने बॉम्बे हूँ इन गोटे मेजर कोस्टल इन वेस्टर्न रीजन अरबियन सी अंडर रे आम देखा बॉम्बे इज वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियल हब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग्स. सो दैट इज द रीजन व्हाई हाउ दे हैव स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द इंडिया. भारत रे इंग्रेज मानकर केमती अभ्युदय है स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्तुगीज मानक केमती से सहित बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट कले हाउ दे हैव एलिमिनेटेड द रोल ऑफ पर्तुगीज. तापर से माने केमती सूरत को आसिले सूरत रु मद्रास को आसिले मद्रास रु कैलकाटा को आसिले कैलकाटा रु मुंबई का. सो ब्रॉडली आम जो देखा से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी प्रादुर्भाव धीरे धीरे आग को बढ़ला. सो नेक्स्ट आम जो देखा दिस इज द फर्स्ट पार्ट. देन सेकेंड क्लास विल बिगिन विथ very shortly in a 1 hour or 2 hour with you. तो आम गोटे घंटा भितर पुणी सब्सिक्वेंटली जो राइज ऑफ इंग्लिश पावर इन इंडिया सेकेंड पार्ट नहीं वेरी शॉर्टली आम पाक आसु. तो जदि ये वीडियोटी आपन को भल लगे ताले ताको लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु आ बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन पांतु. थैंक यू.